Hello everyone, welcome back to DMG chemistry classes, and the topics which I am going to cover in this video are, so first of all we will discuss the free energy change, that is delta G, and standard state free energy change delta G naught of a chemical reaction. Then I will explain the difference between delta G and delta G naught. After this, we will discuss the spontaneity of a chemical reaction in terms of delta G and delta G naught. And finally, I will explain the chemical equilibrium in terms of delta G. So keep watching this video till very end, and don't forget to like and share my videos and subscribe my channel. Okay, so let us start with the first topic, that is free energy change delta G of a chemical reaction. So friends, just like that of your enthalpy and internal energy, every substance is associated with a definite value of free energy at a particular temperature and pressure. Internal energy और enthalpy की तरह ही हर substance की अपनी एक definite free energy होती है एक particular temperature और pressure पर. Okay, and this free energy is represented by the symbol capital G. Okay, and the expression for free energy is G is equal to H minus Ts, that is G is equal to H minus Ts, where G is the free energy of the system or the substance, H is the enthalpy of your system or the substance, likewise T is temperature and S is entropy. Okay, but like internal energy and enthalpy, the absolute value of the free energy of a substance cannot be determined, and fortunately it is not required also. We are only concerned with the changes in these properties which occur during the chemical reaction. Okay, फ्री एनर्जी और इंथाल्पी की तरह ही हम किसी भी सब्सटेंस की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है फ्री एनर्जी की, उसको डिटरमिन नहीं कर सकते, और फॉर्चुनेटली हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि हम जो चेंज इन प्रॉपर्टीज़ में आता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, हम उसको मेज़र करते हैं, एंड दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प विदाउट द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज़, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस इन माई प्रीवियस वीडियोज़. So let us quickly recapitulate here, and to explain this, let us consider a general reaction. A is changing into B. Okay, and let HB is the absolute value of the enthalpy of B, and HA is the absolute value of enthalpy of A. Then delta H of this reaction will be equal to HB minus HA. And delta H is the energy evolved or absorbed during this chemical reaction. But to calculate delta H, okay, the knowledge of this HB and HA is not essential. delta H को निकालने के लिए हमें HB और HA की ज़रूरत नहीं होती है. What we will do, we will simply carry out this reaction and we will measure the heat or energy evolved or absorbed during this reaction. हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को करवाएंगे और इस रिएक्शन के दौरान जो भी एनर्जी इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी वो डेल्टा एच होगा. तो इस तरह से डेल्टा एच को हम मेज़र कर लेंगे विदाउट द नॉलेज ऑफ एच बी एंड एच ए. लाइकवाइज डेल्टा जी ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू द फ्री एनर्जी ऑफ बी माइनस फ्री एनर्जी ऑफ ए. बट वी कैन कैलकुलेट दिस डेल्टा जी विदाउट द knowledge of your GB and GA. We will carry out this reaction and we will measure the free energy evolved or absorbed, and that will be your delta G. But the free energy of a substance is calculated with the help of its chemical potential, and I have explained this term chemical potential in one of my previous videos. There I told you that free energy per mole of a substance is taken to be equal to its chemical potential. किसी भी सब्सटेंस की जो फ्री एनर्जी पर मोल होती है उसको हम उसके केमिकल पोटेंशियल के बराबर लेते हैं. देन वी कैन कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द केमिकल पोटेंशियल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स. ओके, सो लेट अस एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल, एंड टू एक्सप्लेन दिस आई एम कंसीडरिंग a very general reaction in which A moles of A are reacting with
B moles of B, and we can have some more reactants also to give us L moles of L and M moles of M, and we can have some more products also. Okay, now let us suppose that let the mu A, mu B, mu L and mu M are the chemical potentials of A, B, L and M respectively. ओके, तो जो म्यू ए है वो क्या है, ए की फ्री एनर्जी पर मोल, ए के 1 मोल की फ्री एनर्जी है, इसका केमिकल पोटेंशियल है. लाइकवाइज म्यू बी, म्यू एल एंड म्यू एम आर द केमिकल पोटेंशियल्स और फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ योर बी, एल एंड एम respectively. Then the free energy of A in this reaction, then the free energy of A in this reaction will be equal to A into mu A, because in this reaction we have A moles of A and free energy per mole, that is free energy of 1 mole of A is mu A, then the free energy of A moles will be equal to A into mu A. Likewise the free energy of your B, it will be equal to B into mu B. Then the total free energy of your reactants, okay, of reactants, that is GR, it will be equal to A mu A plus B mu B. So likewise the total free energy of the products, that is total free energy of your products GP, it will be equal to L into mu L plus M into mu M. Then we can calculate the free energy change of this reaction by subtracting the total free energy of your reactants from the total free energy of the products. Okay. Then delta G of this reaction, delta G will be equal to your GP minus GR, and let us substitute the values. Delta G, it will be equal to L into mu L plus M into mu M, so on, minus A into mu A plus B into mu B, and so on. So in this way we can calculate the delta G of a chemical reaction with the help of the chemical potentials of reactants and the products. Now we will discuss the second term, that is standard state free energy change, that is delta G naught of a chemical reaction. So students, when all the reactants and products of a chemical reaction are present in standard state, then the free energy change of that reaction is called as standard state free energy change. जब किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे, ठीक है, तब जो उस रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज होगा उसको हम स्टैंडर्ड स्टेट फ्री एनर्जी चेंज कहेंगे. एंड ए सब्सटेंस इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड स्टेट, ओके, व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज यूनिटी. किसी भी सब्सटेंस को हम स्टैंडर्ड स्टेट में तब कहेंगे जब उसका जो टेम्परेचर है वो या तो 25 डिग्री सेल्सियस होगा एंड और 298.15 डिग्री केल्विन होगा, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस विल बी इक्वल टू यूनिटी, दैट इज 1 मोल पर लीटर. बट इफ दैट सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन,
ठीक है। अगर उस सब्सटेंस सॉल्यूशन में होगा तब उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी स्टैंडर्ड कंडीशन में वो 1 मोल पर लीटर रहेगी। बट इफ़ दैट सब्सटेंस इज इन गैसियस स्टेट देन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट विल बी इक्वल टू प्रेशर एंड दैट pressure will be equal to 1 atmospheric. So these are the standard conditions. Okay, and under these conditions the free energy change of a reaction will be called as standard state free energy change. So let us explain it here, and to explain this I am again considering the same reaction here. Okay, and the free energy change of this reaction will be called as standard state free energy change when, okay, when the concentration of your reactants, that is A and B, is 1 mole per liter, and when the reaction has occurred then the concentration of the products is also 1 mole per liter. Okay, and temperature is 25 degree Celsius. So under these conditions the free energy change of a reaction will be called as standard state free energy change. But these conditions seems somewhat unrealistic, unlikely. किसी भी रिएक्शन में ऐसा होना कि रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी 1 मोल पर लीटर हो और प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी 1 मोल पर लीटर हो, ये थोड़ा सा अवास्तविक जान पड़ता है, मुश्किल लगता है कि ऐसी कोई कंडीशन आ सकती है. ओके, देन हाउ डू वी कैलकुलेट दिस स्टैंडर्ड स्टेट फ्री एनर्जी चेंज? So there are many methods which I will discuss in my upcoming videos. So here the standard state free energy change will be calculated with the help of standard state chemical potentials. And what is standard chemical potential? Standard potential of A, okay, will be its free energy per mole when it is present in standard state. ए का जो स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल होगा वो इसकी वो फ्री एनर्जी पर मोल होगी जब ए जो होगा वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा, जब इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर होगी और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा. लाइकवाइज जो म्यू इसका बी का जो स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल होगा वो इसकी फ्री एनर्जी पर मोल होगी जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होगी और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा. So let us suppose that let the mu A naught, okay, mu B naught, mu L naught and mu M naught are the standard chemical potentials. Standard chemical potentials of your A, B, L and M respectively. Then the standard state free energy change of this reaction, that is delta G naught, it will be equal to, that is standard state free energy of products minus standard state free energy of the reactants, and it will be equal to L into mu L naught plus M into mu M naught, because this will be the standard state total standard state free energy of the products minus A into mu A naught plus B into mu B naught. Okay, so in this way we calculate the standard state free energy change of a chemical reaction with the help of standard chemical potentials. Now we will explain that what is the difference between this delta G and delta G naught. So as I said that this delta G naught is the free energy change when every reactant and every product is present under standard conditions. So this means that delta G naught, the value of delta G naught will be constant for a particular reaction because it is under standard condition. किसी भी रिएक्शन का जो डेल्टा जी नॉट होगा वो उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर. क्यों? क्योंकि ये जो डेल्टा जी नॉट है ये अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन है. जब हर रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर है, प्रोडक्ट की भी 1 मोल पर लीटर है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है. ओके, एंड इट विल नॉट चेंज एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस.
because as the reaction proceeds, then you know that the free energy change, the concentration changes. Okay, and the free energy change of a reaction at some other concentration, that is other than your standard condition. मानिए कि let the concentration of A is 2 molar, okay, concentration of B is 3 moles per liter, and concentration of your product as L is 1 mole per liter, and that of your M is 2 mole per liter. तो जब ये कंडीशंस होंगी, ओके, तब जो फ्री एनर्जी चेंज होगा, ये कंडीशन भी हो सकती है, कोई और कंडीशन भी होगी, तब जो फ्री एनर्जी चेंज आएगा केमिकल रिएक्शन का, तो वो होगा डेल्टा जी. दैट इज द फ्री एनर्जी चेंज at some other conditions, that is other than the standard conditions, will be called as free energy change. So this is the difference between delta G and delta G naught, and I will explain it further when I will explain this chemical equilibrium in terms of free energy change in this video. So keep watching this video till very end. Okay. Now I will discuss the spontaneity of a chemical reaction in terms of your free energy change and standard state free energy change. The spontaneity of a chemical reaction in terms of delta G and delta G naught. Okay. So friends, a chemical reaction is said to be spontaneous if it proceeds with the decrease in free energy change. कोई भी आपका chemical reaction spontaneous तब कहा जाएगा जब ये decrease in free energy के साथ होता है, means that free energy of products is less than the free energy of the reactants. Let us explain it with this general reaction, that is A is changing into B. Okay, now let us suppose that GB is the free energy of B and Ga is the free energy of A. Then this reaction will be spontaneous if Gb is less than Ga. Okay, then your delta G which is equal to Gb minus Ga is negative, because when Gb is less than Ga, then delta G is negative. So this means that for a spontaneous reaction, this delta G should be negative. And for a non-spontaneous reaction, for non-spontaneous reactions, Gb will be greater than Ga. Then the delta G will be positive. Okay. So for a spontaneous reaction, delta G is negative, and for a non-spontaneous reaction, delta G is positive. And we can also explain this your spontaneity in terms of delta G naught. What the delta G naught gives us the spontaneity of a chemical reaction under standard condition, that is whether that reaction is spontaneous under standard condition or not. Delta G naught भी हमें spontaneity के बारे में बता सकता है किसी भी रिएक्शन की, लेकिन वो रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन हो रहा हो तब, ठीक है. तो spontaneous reaction के लिए, for spontaneous reaction under standard condition, delta G naught will be negative, and for non-spontaneous reaction, delta G naught will be positive. But it will tell us only the spontaneity under standard conditions, and it doesn't mean that if a reaction is spontaneous under standard conditions, it will be spontaneous at some other condition also. ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशंस में स्पॉन्टेनियस है, हो रहा है, मैंने आपको बताया कि क्या होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस. तो अगर कोई रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर स्पॉन्टेनियस है, हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और कंडीशन में वो स्पॉन्टेनियस हो. इट कुड बी स्पॉन्टेनियस और इट कुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस. ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है.
Let us explain it with a very important relation, that is delta G is equal to, this is delta G is equal to delta G naught plus RT natural log of Q, where Q is the quotient, that is, it is the ratio of the product of the molar concentration of your products to the product of the molar concentration of the reactants, with each concentration term raised to the power equal to the stoichiometry coefficients. Okay, so this delta G is equal to delta G naught plus RT natural log of your L raised to power M and L raised to power small l, M raised to power small m, and A raised to power A, and B raised to power B. And I will explain and derive this relationship in my upcoming videos. Okay, so keep watching this video. But this relationship will give us a very good idea about the spontaneity of reaction in terms of delta G and delta G naught. Suppose that delta G is negative for a chemical reaction. This means that that reaction will be spontaneous under standard condition. ठीक है, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट जो है वो नेगेटिव है तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होगा. ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव है तो डेल्टा जी भी नेगेटिव होगा, क्योंकि डेल्टा जी है फ्री एनर्जी चेंज किसी और कंडीशन पे, क्योंकि डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो डेल्टा जी नॉट के साथ साथ इस क्वांटिटी पे भी डिपेंड कर रही है. इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन दिस क्वांटिटी, दिस एंटायर क्वांटिटी. ओके, suppose that if the value of delta G naught is minus 5, okay, and the value of this quantity comes out to be plus 4, then the value of delta G will be equal to minus 1. Then here delta G naught is negative. Okay, delta G is also negative after calculation. This means that reaction will be spontaneous under standard conditions or in some other conditions. Okay, what if the value of your delta G naught is minus 5 and value of this term comes out to be your plus 10? Then the delta G of this reaction will be positive. This means that this reaction is spontaneous under standard conditions, but it is non-spontaneous in some other condition, क्योंकि इसका डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया, डेल्टा जी नॉट इसका नेगेटिव है. तो दिस मीन्स दैट दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस अंडर सम अदर कंडीशन बट स्पॉन्टेनियस अंडर standard conditions. And if the value of both terms is negative, that is minus 5 and minus 7 here, suppose, okay, then the difference is again negative, minus 12. Okay, so this means that this reaction is spontaneous under standard as well as in some other conditions. And if the value of suppose the delta G naught is positive for a reaction, suppose the value is plus 10 for delta G naught, so this reaction is non-spontaneous under standard condition. What if the value of this quantity comes out to be minus 20, then the delta G of this reaction will be minus 10. Understanding, this means that this reaction is non-spontaneous under standard conditions, but it is spontaneous in some other conditions. So this is how we explain the spontaneity of a chemical reaction in terms of your delta G and delta G naught. Now let us discuss our last topic, that is free energy, chemical equilibrium in terms of free energy change. So chemical equilibrium in terms of your free energy change. Free energy change, okay, delta G. And before explaining it, let us consider a irreversible reaction.
So this reaction is irreversible and this reaction goes to completion. That reactants are completely converted into products. And let your Ga is the free energy of the reactants initially, and that Gv is the final free energy of the products. Then this delta G will be equal to Gb minus Ga, because the delta G is a state function and it depends upon the initial state and the final state. It doesn't depend that what is happening in between. Okay, but reversible reactions or irreversible reaction doesn't go for the completion. जो हमारे reversible reactions होते हैं वो complete नहीं होते हैं, because in reversible reaction both forward as well as backward reaction occurs. अगर इसी रिएक्शन को मैं ये बोलूँ कि अगर ये रिएक्शन जो है वो आपका रिवर्सिबल होगा, ठीक है, या इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा, तो आपके जो ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं. इन रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड वी हैव इक्विलिब्रियम इन बिटवीन. बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है. शुरू में ए जो है इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू बी, देन आफ्टर सम टाइम बी विल स्टार्ट रिएक्टिंग टू गिव बैक ए, and after some time the rate of forward reaction and backward reaction becomes equal and we have equilibrium. And I have explained this term in my previous videos. Okay, but here I will explain this chemical equilibrium in terms of the free energy change. Now friends, as the reaction progresses, as the reaction proceeds further, the concentration or the number of moles of reactants will decrease and those of products will increase. जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल्स है, वो कम होते जाते हैं और जो प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं. सो द फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स विल स्टार्ट डिक्रीजिंग ऑल्सो एंड द फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज. तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो फ्री एनर्जी है वो कम होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ द रिएक्शन एंड दोज ऑफ द प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज. तो होगा क्या कि जो आपका डेल्टा जी है वो मैंने अभी बोला कि क्या है, वो जी बी माइनस जी है. तो एज रिएक्शन इज अकरिंग, concentration of reactant is decreasing, so Ga will decrease and the Gb will increase. This means that this delta G, the value of delta G, it will also change during the course of the reaction. Delta G की अलग अलग value आएगी at the different stages of the chemical reaction or after the different time intervals. होगा ना ऐसा. तो जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी जब जब रिएक्शन आएगा. लेकिन यहाँ पे आई वॉन्ट टू मैंशन हेयर दैट इट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी विच विल चेंज बिकॉज जी बी एंड जी ए आर चेंजिंग, नॉट डेल्टा जी नॉट. ओके, बिकॉज डेल्टा जी नॉट इज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज फिक्स्ड एट 1 mole per liter for the reactants and the products both. Understanding? So that's why this delta G is the free energy change at actual concentrations when the reaction is occurring, okay, other than standard conditions. So delta G will change during the course of reaction. And at equilibrium, okay, at equilibrium the free energy of the products reactants, it becomes equal to free energy of the reactants. Let us explain it diagrammatically here. देखिए, so we have your free energy along this direction and that is G, and this line is representing the state of your chemical equilibrium. Okay, now as I said that as the reaction progresses the free energy of the reactants will decrease and those of products will increase because their concentration are changing. Concentration of reactants is decreasing and those of products is increasing. So like here, that is the concentration and the free energy of the reactants is decreasing. So here I am representing reactants. Okay, and the free energy of the products will increase as their concentration is increasing. And at equilibrium, okay, at equilibrium the free energy of your products reactants will become equal to the
फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, दोनों की फ्री एनर्जी बराबर हो जाएगी, ठीक है। एंड डेल्टा जी इट इज इक्वल टू जी पी माइनस जी आर, and when your Gp is equal to Gr, then delta G will be equal to 0. So this means at equilibrium, the delta G of that reaction, free energy change of the reaction becomes equal to 0, and the concentration of the reactants and products becomes constant. जब equilibrium आता है ना, तो आपके जो reactants और products की जो concentration होती है वो constant हो जाती है। equilibrium आने के बाद वो change नहीं होगी, और डेल्टा जी कितना हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, ओके। एंड बट हेयर इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट डेल्टा जी नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, बिकॉज डेल्टा जी नॉट इज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, okay, so it will not be equal to 0 at equilibrium. It is the delta G which is equal to 0. Yes, if at equilibrium that reaction is इन स्टैंडर्ड स्टेट, अगर इक्विलिब्रियम आने के बाद जो है वो रिएक्टेंट्स भी और प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में होंगे, तो फिर डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू डेल्टा जी एंड बोथ विल बी इक्वल टू 0. बट दिस इज द कंडीशन व्हेन द रिएक्शन, व्हेन एट द इक्विलिब्रियम द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, okay. Otherwise at equilibrium delta G will be equal to 0 and delta G naught will not be equal to 0, and I have explained it. Okay, so this is all about the chemical equilibrium in terms of your free energy change. What very interesting question arises that in reversible reaction, okay, in reversible reaction both forward and backward reaction takes place, and I have explained it that for a spontaneous process or spontaneous reaction delta G is negative. So does it mean that your delta G is negative for both forward as well as backward reaction? देखिए किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में ना दोनों रिएक्शन होते हैं, आपका फॉरवर्ड भी होता है बैकवर्ड भी होता है, तो मतलब दोनों ही के लिए क्या डेल्टा जी नेगेटिव है, क्योंकि दोनों हो रहे हैं, दोनों स्पॉन्टेनियस है। तो हमने ये चीज़ तो पढ़ी है कि मानिए कि ये रिएक्शन अगर डेल्टा ए इज चेंजिंग इनटू बी एंड बी इज अगेन चेंजिंग इनटू ए, and if delta G is negative for the forward reaction, then it will be positive for the backward reaction. हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव है तो ये बैकवर्ड के लिए पॉजिटिव होता है. This means that if this is the condition, then the reaction is not spontaneous, is spontaneous in the forward direction and it is non-spontaneous in the backward reaction. तो ये forward reaction में होगा, backward में नहीं होगा, ठीक है. लेकिन जो reversible reaction है उनमें तो दोनों ही reaction होते हैं, आपका forward भी होता है, backward भी होता है. So does it mean that the delta G is negative for the forward as well as backward reaction? तो क्या डेल्टा जी नेगेटिव होगा दोनों के लिए, फॉरवर्ड के लिए, बैकवर्ड के लिए भी? इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियोस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.